Hello my dear student, welcome you here in this lecture number 48 for that topic, human reproduction. Now we have to learn, we have already studied fertilization or conception process in the last lecture. And we have seen that fertilization is the process of fusion of one haploid sperm from the male person with that one haploid female gamete called as ovum or egg. Okay, so when they fuse together, they produce a diploid cell known as zygote. Okay, how that process occurs, that details I have given in the last video. Okay, so don't miss that lecture, do watch. Now you know that here we have to discuss one other point there, that sperm has got a haploid number of the chromosomes, you know. So that means how many chromosomes are there? 23. Ovum is also haploid. It also has got 23 number of the chromosomes. And zygote form is diploid and it has got 46 chromosomes, you know. Okay. It has got 46 chromosomes. That means 23 pairs. So diploid and haploid, you know. Why it is called diploid? Because the chromosomes are present in the form of pairs. Okay. That is called as the paired chromosomes. When paired chromosomes are there, that is called as diploid. Whatever the number is there. For every species, this diploid number of chromosome is fixed or characteristic, you know. Okay, so haploid number of chromosomes present in that sperm, haploid number of chromosomes present in that ovum or egg, when they fuse together. And why the haploid number is formed there? Because of the meiosis, you know. Okay, so meiosis होने के बाद ये haploid हो जाता है. And now how the sex of that, this zygote further, you know. The zygote will undergo divisions there. All divisions will be the mitotic divisions, mitosis, okay, to form the multicellular embryo. This embryo will have all diploid cells that will form the fetus, which is looking at like the human. And then that fetus will also have all the cells with that diploid number of chromosomes, and that will develop into the young one or the child. Now you know that this child which will born will either be a boy or a girl. And this story, you know what happened exactly. So I would like to point out here, I would like to say here that this will be determined right at the time of fertilization. तो ये सीक्वेंस ध्यान में आ रहा है. हैप्लॉइड गैमेट कैसे बन गए थे? हैप्लॉइड गैमेट्स वेर फॉर्म्ड बाय meiosis division of that gamete mother cells. That you know. meiosis में number of chromosomes half हो जाते हैं. तो diploid gamete mother cells जो है वो जब meiosis करता है, then they produce the haploid gametes. And by fusion of the haploid gametes, again the diploid number is restored. That is one of the significance of that fertilization process. Okay, तो ये zygote diploid बन गया है, single cell है, and everybody of us has been developed from this single cell called as the zygote. फिर क्या होता है? ये zygote जो है that undergoes mitotic divisions that we shall learn now. They called as the cleavage. फिर बन जाता है embryo. Then that embryo undergoes organogenesis. वहाँ पे कुछ organs बनने लगते हैं जो हमारे शरीर के अंदर है. And then the structure also it changes, and that gets as like the human one, and that is called as the fetus. Okay, और ये fetus जो है वो develop, पूरी development होने के बाद at the time of birth it will be converted to the development to the young one, that is the child, and then the mother will give birth to that child. अब देखो क्या होता है यहाँ पे, नेचर का करिश्मा क्या होता है? The developing child may be either a boy or a girl. 50-50% chances are there. So how it is decided
व्हाट आर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द जाइगोट, ये कभी पूछा गया तो क्रोमोसोम जो है वो कितने हैं 46 डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और ये कैसा होता है हमें मालूम है, वी नो दैट इन केस ऑफ द मैन or then got the father I will say, okay, and then the woman that is called as the mother, okay। तो ये तो आपने बिल्कुल 10th में लर्न किया होगा। तो सपोज दे अंडरगो मैरिज so this is just for your fun, actually in genetics it is shown like this, but I don't use to show like this because it means crossing, so why a crossing should be there between the father and mother, that's why I used to show like this, okay। छोड़ दो। तो ये फादर जो है वो डिप्लॉयड सेल्स उसमें है, और डिप्लॉयड सेल में क्या होता है, वहां पे 44 ऑटोसोम्स आर देयर which are controlling the vegetative characters, and 2 sex chromosomes are there, and that combination is heterozygous, you know। The sex chromosomes are of two type, X and Y। एक होता है X क्रोमोसोम, एक होता है Y क्रोमोसोम, वो पेयर होती है। अगर XY पेयर है तो इसका मतलब क्या है, इट इज ए मेल चाइल्ड, और अगर XX है तो इसका मतलब क्या है, फीमेल चाइल्ड, दैट यू नो। मदर इज ऑल्सो हैविंग 44 ऑटोसोम्स। अब ये सेक्स डिटर्मिनेशन में ऑटोसोम्स का कुछ रोल नहीं है, तो इसके बाद में हम नहीं दिखाएंगे। 44 ऑटोसोम्स प्लस XX, so mother is homozygous। Now at the time of meiosis division, these chromosome pairs get separated, and whatever the number of sperms will be formed, 50% sperms will get X chromosome and 50% will get Y chromosome, okay। तो ये 44 ऑटोसोम्स का भी 22 आ गया है, so 22 ऑटोसोम प्लस X, that is 23, 22 autosome plus Y, that is 23, so 2 types of the sperms are formed there by the father, okay। ये हमको मालूम है। तो इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द मैस्कुलाइन, दिस फेमिनाइन स्पर्म विच कंटेन्स द X क्रोमोसोम। X क्रोमोसोम जिसमें है वो है फेमिनाइन स्पर्म, और जिसमें Y क्रोमोसोम है वो है मैस्कुलाइन। फेमिनाइन यानी फीमेल कैरेक्टर वाला, और मैस्कुलाइन यानी दैट इज पर्टिकुलर मैन का, फादर का कैरेक्टर वाला, मेल कैरेक्टर वाला, ओके। 50-50% हो गए हैं, एंड वॉट एवर द एग्स विल बी फॉर्म बाय मियोसिस, every time one ovum is formed, you know, other is the polar body, so that will always have the X chromosome, okay। This ovum will be always having X chromosome। तो अब यहाँ पे ही क्लियर होने वाला है, at the time of fertilization the egg will be always containing that X chromosome। Suppose that X chromosome containing sperm, that is called the feminine sperm, is fused with this ovum, what combination you will get, XX, okay। And suppose that Y chromosome containing sperm is getting fused with the ovum, what combination you will get, XY। So 2 types of the combinations are possible there, okay, either XX or XY। If feminine sperm is fusing with the ovum, you will get XX, and if masculine is fusing with ovum, you will get XY। So this XX zygote, ये zygote ही है और ये भी zygote ही है after fertilization, because the act is known as what, fertilization, that we have just discussed। इसको ही हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट। ये गैमेट्स हो गए यहाँ पे, दीज आर द गैमेट्स, ये जेनेटिक चार्ट में, ओके। ये है पेरेंट्स, P1 जनरेशन, ओके। और अभी ऑफस्प्रिंग जो आने वाले हैं, ऑफस्प्रिंग्स और द यंग वन, प्रोजेनी, ओके, तो वो कैसे होंगे। नाउ जाइगोट विद XX विल डेवलप इनटू द फीमेल चाइल्ड। Female child means daughter, and zygote with the XY will develop into the male child, that is son। So whether son is to be born or whether daughter is to be born, that is decided by whom, my friend? That is decided by the type of the sperm, okay।
ultimately I will say type of sperm used for fertilization, used for fusion, decides the sex of developing child. Decides the sex of developing child. जो चाइल्ड डेवलप होने वाला है उसका सेक्स, ये टाइप ऑफ द स्पर्म डेवलप जो फ्यूज होने वाला है, दैट इज गोइंग टू डिसाइड. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. एंड दैट मीन्स एवरी टाइम मदर हैज नथिंग टू डू विद दैट सेक्स ऑफ द चाइल्ड विच इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस बाय हर, बट दैट फादर विल डिसाइड. दैट स्पर्म, फादर के भी हाथ में कुछ नहीं है, दैट द स्पर्म ऑफ द फादर विल डिसाइड. और ये 50-50% स्पर्म्स है दोस्तों. हमें याद है पर्टिकुलरली वन इजैकुलेशन कंटेन्स मोर देन 200 मिलियंस, नियर अबाउट 200 to 300 मिलियंस ऑफ द स्पर्म्स. भारी मात्रा में स्पर्म्स है. उसमें से एग्जैक्टली 50% है एक्स टाइप एंड द रिमेनिंग 50% आर ऑफ वाई टाइप. यानी और वो स्पीडली जाते हैं या इस अपने एग की तरफ. वो 3 इडियट्स में स्टार्टिंग में दिखाया, देखो 3 इडियट्स पिक्चर देखो वहां पे. तो ये स्पर्म्स जो है दे आर रैपिडली अप्रोचिंग टूवर्ड्स द एग. अब यहां पे भगवान को भी नहीं समझ में आएगा कौन सा स्पर्म फ्यूज होने वाला है, बिकॉज दे आर एग्जैक्टली सेम मॉर्फोलॉजिकली एग्जैक्टली सेम है. with the concern of potential they are also exactly same. ऐसा नहीं है कि एक्स क्रोमोसोम ज्यादा डायनामिक है, ज्यादा मोटाइल है वाई क्रोमोसोम से, ऐसा कुछ भी नहीं है. दे आर एग्जैक्टली सेम. द डिफरेंस इज ओनली ऑफ एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम. यानी कोई भी यहाँ पे ऐसा अनुमान नहीं लगा सकेगा कि बिल्कुल इस टाइम एक्स टाइप का क्रोमोसोम फ्यूज होने वाला है, बिल्कुल इस टाइम वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म फ्यूज होने वाला है. दैट कैन नॉट बी guaranteed even by the God. And that's why whatever the issue is there, that one has to accept happily. And therefore that's whether boy is born or that daughter will be born, girl will be born, that will be decided by the sperm of the father, and that is mere a matter of chance, not by the mother. Mothers are not responsible. Particularly ये मैं बात बार बार हर बैच में कहता हूँ, क्योंकि अभी भी जो अनएजुकेटेड लोग हैं या जो देहाती लोग हैं वो अपने बहू को जो है वो तकलीफ देते हैं. दैट पर्टिकुलरली द वुमन आर गेटिंग ब्लेम्ड इफ शी इज प्रोड्यूसिंग दैट डॉटर कंसिस्टेंटली. तो उसमें उसका कुछ भी दोष नहीं है या किसी का भी दोष नहीं है. दैट इज नेचर्स गिफ्ट. एंड दैट्स वाई ये अगर आपको कहीं ध्यान में आया हो, आपने समझ लिया है अभी, तो डेफिनेटली यू शुड फाइट. You should stand by the side of that woman and you should fight to the seniors. इसलिए मैं ये बात बार बार कहता हूँ. So try to learn this point very clearly. ये फिर यहाँ पे हमने लिया है क्योंकि CBSE के बुक में भी एक पैराग्राफ में दिया है. Okay? So I hope you have understood it very properly. ये खाली यहाँ पर बायोलॉजी के 12th सिलेबस में इम्पोर्टेंट ऐसा नहीं है. This will be helpful to you throughout the life. Knowledge is very important. Okay? So do like and share this video to the friend circle और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को. Do subscribe to my Cartesian Biology and Cartesian Biology Shorts channel. We shall meet again in the next lecture. Thanks a lot.